So, hi friends, I'm Dr. Anshul Bansal again joining you on the Unacademy platform. In today's YouTube live session, we will study about compartment syndrome. Very important from a NEET PG point of view से बहुत simple questions आते हैं, important topic है and clinical point of view से बहुत बहुत important topic है. Every MBBS graduate should know how to diagnose a compartment syndrome because it is a medical emergency, and every medical student and MBBS graduate at least should know about the management of the compartment syndrome, because अगर ये timely manage नहीं किया या diagnose नहीं किया तो it will lead to the amputation of the affected limb. Okay, there is no other thing that you can do. So very important topic is the compartment syndrome today. Okay, so here we'll study in-depth orthopedics because it will help you not only to crack your competitive examinations like NEET PG, INI-CT, FMG, etc., but also your prof university examinations, and we will have special emphasis and focus on the clinical based scenarios, the x-rays, the images, etc., so that you could do well in your next examination, also your practical examinations, and also the new type of questions in the NEET PG. Okay, currently I'm working as an orthopedic house surgeon in SMS Medical College Jaipur, and I have cracked the NEET PG examination last year, that is in 2020 only. Okay, so without much delay, let us start today's lecture about the compartment syndrome. And before starting, I would just briefly guide you through our various subscription plans that are available on NEET PG on Unacademy for the NEET PG. And the first paid subscription plan is the Plus subscription. The Plus subscribers will get access to both the live and recorded classes, and all of the live and recorded classes, the QBanks, they can participate in live tests and quizzes. All of these are formed by the topmost faculty for NEET PG of India. And also the Plus subscribers will get a chance to log in to multiple devices with the same account, so that you can not only so that you can study on any device of your choice at any time. And also for the subscribers who will be subscribing for 12 months or more, we will be shortly providing them with a printed notes, so you can subscribe for this package and you can use this code while subscribing to get extra 10% off. The second one and the best one is the iconic subscription, and it is best not only on the Unacademy but also best across any digital platform in India. And why it is best? Because apart from the things that I have mentioned earlier, extra may you will get the prep ladder, and all of the prep ladder including all of its Q banks, the video lectures, the grand test, the rapid revision courses, etc., everything you will get. And on Unacademy extra may you will get well structured classes which are batch wise classes, and we have structured and formulated our courses and batches in such a way so as to build your basic concepts first, then going into the in-depth. And also we have decided to correlate the same topic in different subjects, like this compartment syndrome wala topic bhi orthopedics, surgery, pathology सब जगह आता है. So every time when it will come, we'll revise the topic, and it will help you to correlate with the things and also understand it better. And the iconic subscription, बहुत importantly, will get a individual assessment sheet after every test that they give, so that they can analyze themselves, and you can analyze कि yes ये topic या ये subject मेरा weak है, और these type of questions come from these topics. So and importantly it will help you to decide कि yes हम मुझे कहाँ पे किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट पे I need to give more time. So they are very crucial for the plan of your study. So assessment is very important, and you can, to enjoy the benefits of all these things, you just need to subscribe for the Unacademy iconic subscription, and you can use my code Anshul B10 while subscribing to get extra
10% off. Special class, very important thing, because they will give you the extra edge over your competitors, and they are special because you will get a live classroom like feeling, because they are very interactive classes. You can interact with your educators, you can participate in polls, clear your doubts there and there only. And you just need to download the Unacademy app, subscribe using my code, and both of which are absolutely free. You can watch the lectures anywhere, anytime, just by logging through into this app. And also you can watch these classes anytime, because it is not that कि सिर्फ live classes ही होगी. No, live classes तो होती है, that is the best if you attend, because you can interact with your educator there also. But you can watch the recorded versions also, and you will be given the digitalized notes of these classes. Okay, so very important are the special classes. And keeping in mind the different sets of students who are focusing on different examinations, like some are focusing on the FMG or INICET or 2022 examination or the next examination. So dedicated to these students, we have formulated special batches, and you can subscribe for these batches or courses using this code to get extra 10% off. Like for the FMG as well as 2022 aspirants, we have started a batch from 8th of the September. And for the INICET, we have started a batch from 15th of September. And very importantly, yesterday only INICET ki examination date have been announced, and it is 14th November. So less than 2 months are left. Okay, so जिसका focus INICET है, they should buckle up and they should study. Okay, वापस से पढ़ाई पे लग जाओ जिनका भी फोकस INICET एग्जामिनेशन है. Okay, and stay in touch with the activities on the aimsexam.org website, because there you'll get the important notifications and the last dates of the form filling, etc. Okay, and from the 15th September, we have started a very important clinical procedure and examinations batch, and this is very important. Why? First of all, जो भी आप थ्योरी में पढ़ते हो, that you can correlate here, so it will be a very easy to revise you as well as very easy to learn for you, and it will be very easy to build the concepts. Okay. सो वेरी इंपॉर्टेंट दीज. तो पहला तो इस वजह से. सेकंड, कीपिंग इन माइंड द नेक्स्ट एग्जामिनेशन और द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, दे विल हेल्प यू बहुत ज़्यादा. एंड ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, इंटरेस्ट डेवलप करेगा ये आपको आपकी पढ़ाई में, सब्जेक्ट में और टॉपिक में, बिकॉज यू कैन अप्लाई द थिंग्स दैट यू हैव learned from your notes. Okay, notes theory reading sometimes can be very boring, तो इसलिए जैसे ही images आती है, it develops interest. Like इसलिए clinical examination and procedures batch is very important, because it will develop your interest. So I would strongly suggest you to buy the subscription package for this course. And while buying the subscription package for any course, you can use this code to get extra 10% off. Now we are running two types of limited time period offer abhi. First is if student or any subscriber will buy a package or subscribe for a course for 12 months or more, 2 months of that subscription he or she will get एक्स्ट्रा में एब्सोल्युटली फ्री, एंड 2 years या 24 months पे 4 months will be absolutely free. And the second one is we are running a limited time period heavy discount on the iconic subscription. Like earlier, for the 4 years, the iconic subscription was for 75,000 for the entire 4 years. Okay, but now it is just
for 65,250 for the entire 4 years. So please, it is a limited time period offer. Go and grab this offer because it is for a very limited time period offer. इतने सस्ते में कोई नहीं पढ़ाएगा 4 साल के लिए, that too with the top notch quality notes and the questions, as well as all the things that you need is available on the Unacademy. Okay, so please go and subscribe and enjoy the benefits. So we'll now quickly start today's lecture about the compartment syndrome. So let's crack NEET PG with Unacademy. Okay, so compartment syndrome होता क्या है? Actually जो भी limbs होता है, be it the upper limb or the lower limb, there are compartments. तो compartments में क्या होता है? Skin, then there is fascia, उसके अंदर there are bones, muscles, tendons, ligaments, interosseous membrane, etc. So if there is any rise in pressure, or there is any pressure up in this compartment, it will lead to the ischemia, because it will compress the vessels, and it will lead to the nerve damage also, that will lead to the tingling, numbness sensations. And अगर ये continue रहता है बहुत टाइम तक, तो obviously the acute ischemia will lead to the gangrenous changes or the gangrene of the muscles, and then you have to do the amputation. Okay, so what is compartment syndrome? A rise in pressure within the compartments will jeopardize the blood supply to the muscles and nerves, and resulting into a syndrome called as compartment syndrome. Okay, like in the leg bone you have these compartment. Okay, so ऐसे compartment you all know, compartment उसके अंदर bones, muscles, okay, of the upper and the lower limb. So compartment syndrome can occur anywhere in the body, but most commonly it occurs in the leg area and the forearm area. ये दो सबसे common होते हैं. So fracture of both bone forearm, fracture of proximal tibia, and fracture of distal tibia, they are very commonly associated with the compartment syndrome. And in fractures में especially ये ध्यान रखने वाली बात है, closed fractures only. ओके, सिर्फ क्लोज फ्रैक्चर्स के अंदर ही कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है. अगर फ्रैक्चर पहले से ही ओपन है तो ऑब्वियसली प्रेशर तो बिल्डअप हो ही नहीं पाएगा, और प्रेशर जो भी होगा दैट विल बी रिलीज फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द वुंड. सो क्लोज फ्रैक्चर्स में ही कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा, एंड दैट टू in case of fractures of both bone forearm, proximal tibia and distal 1/3 of the tibia. यहाँ पे compartment syndrome is common. Okay, now compartment syndrome में क्या होता है? इसकी अपन अगर पैथोफिजियोलॉजी देखें तो it is like a vicious cycle. Okay, it is like a vicious cycle. कोई भी फ्रैक्चर हुआ या ट्रॉमा हुआ, so it will lead to the arterial spasm or occlusion leading to the muscle ischemia, या फिर मान लो both bone forearm का fracture हुआ and it is closed. Okay, so it will lead to obviously inflammation and the histamine release that will cause the increased permeability. Okay, and pressure से वैसे ही venous obstruction है, तो इन दोनों चीजों की वजह से there will be increased intramuscular edema, pressure will increase more, that will again compress all these structures, and इस compression से there will be vasospastic reflux that will lead to the muscle ischemia. So ये एक vicious cycle है जो अपने आप कभी ठीक नहीं हो पाएगी. You need to intervene in this. Okay, so what are the causes? Causes can be any injury leading to edema of the muscles, fracture, and fracture के अंदर mainly the hematoma that will compress the structures, and in case of ischemia to the compartment, that will lead to the muscle edema. Okay, now the etiology, most common and the most important etiology is the trauma, that to fractures, and fractures में almost 2/3 of the closed cases of fractures जो होते हैं ना, they are associated with the compartment syndrome if not diagnosed or if not checked.
Okay, so other symptoms other etiology or causes can be the contusion or the gunshot wounds. Very important in case of orthopedic setting is your tight cast or dressing or the external wrapping. So cast वगैरह, especially in these locations that I've told you earlier, यहाँ पे you need to take care कि यहाँ पे you need to put a soft and loose slab or cast. Okay, there in case of burns or post systemic swellings, bleeding disorders or arterial injury, इन सब में compartment syndrome हो सकता है. Now the cascade of events, सबसे पहले there will be trauma, soft tissue destruction, hematoma, then there will be bleeding, hematoma and edema, increase in the interstitial pressure which will lead to the occlusion of the nerves and the vessels, और इससे flow और कम हो जाएगा venous flow, जिससे pressure और बढ़ेगा, because there will be increased interstitial pressure, there will be increased intramuscular pressure which will lead to the ischemia of the muscles and the nerves. Okay, and importantly fractures में भी जो diaphyseal fractures होते हैं, the diaphyseal fractures are most commonly associated with the compartment syndrome, and that too in the young age. यानी most common या highest prevalence जो होती है compartment syndrome की, it is in the young adult or adolescent population 12 to 19 years of the age. Okay, so remember this thing कि young लोगों में ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है. compartment syndrome, remember, is a medical emergency. Okay, compartment syndrome is a medical emergency, very important, remember this thing. So symptoms के लिए यह ध्यान रखना है 5 P's of the compartment syndrome, and the earliest and the most important symptom is your pain. Okay, and very importantly pain कैसा होगा, pain will be out of proportion पेन होगा, यानी फ्रैक्चर से जितना पेन नॉर्मली होता है उससे बहुत ज्यादा पेन होगा, एंड इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिव टू एनसेड्स. ओके, एनसेड्स वगैरह से इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एंड सीरियसली पेशेंट जस्ट क्राइज एंड शाउट्स इन एगनी इफ देयर इज अक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम. ओके, सो पेन एक क्लासिकल फीचर होता है which is the earliest, most important, out of proportion pain and non-responsive to the NSAIDs. This type of pain अगर हो रहा है patient को with swelling and blisters, swelling, redness, warmth, okay, then you should definitely suspect compartment syndrome and rule out. So first P is pain, second is pallor, okay, third is paresthesia, that is numbness and tingling, fourth is pulselessness, and fifth is the paralysis. Paralysis and pulselessness both occurs late, and सबसे लास्ट में there will be paralysis, weakness of the joint movements is paralysis. Okay, now इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन वी नीड टू डू, उससे पहले सिम्टम्स देखते हैं. पेन, इट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, फर्स्ट और द अर्लीस्ट सिम्टम, बट अगर नर्व डैमेज है पहले से ही, सो इट मे बी एब्सेंट, बट जनरली इन क्लोज्ड केसेस नर्व डैमेज कम ही मिलता है. सो पेन इज द फर्स्ट सिम्टम. ओके, एंड बट in some types of patients, especially the polytrauma वाले patients, यानी एक से ज़्यादा multiple injuries होती है, so there it is very difficult to assess. Like if there is head injury, तो patient पहले ही disoriented होता है, और the patient is unconscious or intubated, or the patient, okay, or the patient is a baby. ओके, पेशेंट इज अ बेबी और चाइल्ड, देन चाहे थोड़ा सा भी दर्द हो चाहे ज्यादा दर्द हो, वो रोएगा ही और कुछ भी नहीं करेगा, एंड ही और शी विल आल्सो नॉट बी एबल टू लोकलाइज द पेन. सो these symptoms of the compartment syndrome may be very difficult to identify in some cases, so we do the physical examination. तो ऐसे cases में we need to measure the pressure. तो ऐसे cases में
we need to measure the pressure in the affected compartment. ओके, so ये प्रेशर मेजर कैसे करते हैं वो भी अपन देखेंगे, और कितना होना चाहिए वो भी अपन देखेंगे. ओके, सो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले वी विल डू दी स्ट्रेस टेस्ट. ओके, पैसिव स्ट्रेच ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप पैसिवली स्ट्रेच करोगे देन देयर विल बी वेरी इंटेंस पेन, लाइक इफ देयर इज बोथ बोन फोरआर्म फ्रैक्चर, यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम है. सो रिमेंबर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा, सो द फ्लेक्सर मसल्स विल बी इफेक्टेड. सो इफ आई विल लाइक दिस इज माई फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, सो अगर मैं ऐसे स्ट्रेच करूंगा फिंगर्स को लाइक दिस, सो द ऑपोजिट एक्शन ऑफ दी फ्लेक्सर मसल्स, उससे यहाँ पे फ्लेक्सर मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी एंड दिस विल लीड टू वेरी वेरी इंटेंस पेन. सो दिस इज योर पैसिव स्ट्रेच साइन, very important sign for diagnosing the compartment syndrome. And if nerve पे pressure ज़्यादा है तो there will be paresthesia, hyposthesia, numbness, tingling sensation और in later cases paralysis. Full recovery बहुत rare होती है because if there is ischemia तो muscle nerves there will be damaged and they heal by fibrosis leading to the contractures. There may be swelling, very clearly evident swelling. Okay, peripheral pulse is absent and amputation is required if there is gangrenous changes. अब आपको एक ध्यान रखना है वो है पेरिफेरल पल्सेस का, कि पेरिफेरल पल्सेस may be absent even if compartment syndrome is absent, because पॉलीट्रॉमा पेशेंट है, बहुत ब्लीडिंग हो गई, शॉक में आता है पेशेंट, तो समटाइम्स ड्यू टू द शॉक इट इज वेरी फीबल, वेरी हार्ड टू फील पेरिफेरल पल्सेस. ओके, सो इन दीज केसेस और इफ देयर इज वेसल कट एक्सेट्रा, सो डोंट डायग्नोज कंपार्टमेंट सिंड्रोम विद द हेल्प ऑफ पल्स ओनली. अगर पल्स नहीं है एंड इफ देयर आर क्लिनिकल फीचर्स इतने ज्यादा इंटेंस नहीं है, सो डोंट मेक अ डायग्नोसिस. Peripheral pulses is not, absence of the peripheral pulses is not the hallmark of the compartment syndrome. Remember, see this is the right leg. So right leg जो है the of the patient is having the compartment syndrome. You can see shiny, swelling, and obviously it will be warm and tender. Okay, it is shiny, it is swelling, there is in the case of the compartment syndrome. Okay, this is compartment syndrome of the forearm. Here you can see blister formation. So blister formation is also a sign leading which will guide you that compartment syndrome ho raha hai. Okay, here you can see swelling. So this is your compartment syndrome. Now consequences we have already discussed कि एक vicious cycle होती है and it will hamper the vascularity leading to the gangrenous changes of the muscles and also the neurological changes and the neurological signs and symptoms. Sorry. Okay, so it will lead to muscle necrosis or the nerve damage and it will lead to fibrosis leading to the contractures जब वो heal होगा. Okay, now diagnosis is basically in most cases it is clinical diagnosis, and again I'm telling you it is a medical emergency because you will need to do the amputation of the limb. And अगर बहुत टाइम से मरीज आपके यहाँ पे है एंड यू हैव नॉट डायग्नोज द कंपार्टमेंट सिंड्रोम देन इट इज अ पार्ट ऑफ द नेग्लिजेंस. Okay, so very important to diagnose compartment syndrome. Mostly it is clinical, but कुछ cases like if the patient is unconscious or the patient is disoriented having head injury, or the patient is in coma, or the patient is of child or children age group, so in some cases में sometimes it is difficult. So उन cases में you have to measure the compartment का pressure. Okay.
So, what are the high risk fractures? Supracondylar fracture of humerus, both bone forearm, closed tibial fractures, proximal and distal, and crush injuries to the leg and the forearm. Okay, stretch test we have discussed, and this stretch test is the earliest sign of the impending compartment syndrome. Okay, और अब आप बोलोगे सर आपने तो पेन बताया था, तो स्ट्रेच टेस्ट करने से क्या होता है? इफ देयर इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम देयर विल बी इंटेंस पेन ओनली. ओके, सो स्ट्रेच टेस्ट इज द अर्लीस्ट साइन of impending compartment syndrome. Okay, and we have already discussed ki it will be passive and moving the joints in direction opposite to that of the damaged muscle. Like अगर flexors को check करना है तो you passively extend the fingers. Okay, other signs में you will have the hypoesthesia and etc. Okay, now कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये क्वेश्चन हो सकता है वन लाइनर, दैट इज कब आप कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलोगे? इफ द प्रेशर इज मोर देन 40 mm ऑफ वाटर इज इंडिकेटिव ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम. और पल्सेज अपन ने बोलता कि पहले ही पैल्पेबल नहीं हो सकती है, एंड ऑल्सो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होते हुए भी pulses can remain palpable till very late. So it is a false sense of security कि पल्स आ रही है तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं होगा. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ कंपार्टमेंट प्रेशर मेजरमेंट आप किन केसेस में करते हो? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लाइक इन पॉलीट्रॉमा और अनकॉन्शियस पेशेंट, नॉट अलर्ट, अनरिलायबल, children. Okay, and if the physical findings are inconclusive. Okay, now unequivocal clinical findings भी अगर है, clinical findings से if you are suspecting a compartment syndrome or you have diagnosed the compartment syndrome, don't waste your time in measuring the compartment syndrome pressure. Okay, clinically diagnose कर लिया है, then you have to treat the compartment syndrome. measurement में time waste नहीं करना है, it is of no use. Okay, remember this, very important. Now measurement कैसे करते हैं? तो measurement करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग एरियाज में अलग अलग टेक्निक यूज होती है, बट द बेसिक टेक्निक इज you have to measure this pressure within 5 centimeters of the fracture site. 5 centimeter ऊपर, 5 centimeter नीचे, सिर्फ इसी एरिया में you need to measure the compartment pressure. So अगर आप anterior compartment of the leg का measure करना चाहते हो, so you need to make the entry for the measurement 1 centimeter lateral to the anterior border of the टिबिया, यानी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया के थोड़ा लेटरल साइड में जाओगे, एंड नीडल शुड बी परपेंडिकुलर टू द स्किन. सो रिमेंबर, लोअर लिम्ब में एवरी टाइम कहीं पे भी इंसिजन लगाना है, यू विल प्रेफर द लेटरल एस्पेक्ट बिकॉज लेटरली देयर आर नो मेजर वेसल्स एंड नो मेजर नर्व्स. दैट्स व्हाई लोअर लिम्ब में कहीं पे भी इंसिजन लगाना है, थाई, लेग, you mostly go from the lateral aspect. और अगर आपको posterior compartment, then you have to go posterior to the medial border of the tibia. Okay, and perpendicular होनी चाहिए आपकी needle. Lateral compartment में you need to go just anterior to the posterior border of the fibula. Fibula के ऊपर से you need to measure it. Okay, now treatment very important because ये medical emergency होती है, तो every medical student or MBBS graduate must know how to treat the compartment syndrome. Okay, it is very important. Okay, so सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, very important is सबसे पहले जस्ट एलिवेट द लिम्ब. जनरली हमारे यहाँ पे प्रॉक्सिमल टिबिया के जो पेशेंट्स आते हैं, सो वी स्टार्ट द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम फ्रॉम द वर्ड गो या एडमिशन के टाइम से. लाइक वी से कि
दो कुशन्स और दो तकिए लेके आओ, उस पे यू नीड टू पुट द लिम्ब एलिवेट करना है. We slit the slab or the cast. Okay, there should be no tight bandaging over the fracture site, and also active toe movements या active finger movements करने की बोलते रहना. Okay, it is very very important. Active toe movements, active finger movements. So for finger movements generally give that smiley वाली ball to the patient कि इसको दबाते रहना. तो फिंगर मूवमेंट, टो मूवमेंट्स, लिम्ब एलिवेशन, स्लिटिंग ऑफ द कास्ट, कोई भी बैंडेज, रैप या किसी भी चीज से जिससे प्रेशर बने वो सब रिमूव करनी है. एंड देयर इज वन टैबलेट, देयर इज वन ड्रग दैट यू गिव फॉर the preventive measure of the compartment syndrome or decreasing the pressure, and that is chymotrypsin. Okay, chymotrypsin, very important. Chymotrypsin you give, it decreases the inflammation and the swelling. Okay, and अगर stabilized compartment syndrome है, then you इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा. You need to do the surgical intervention to save the limb, and surgical intervention of choice or treatment of choice of the compartment syndrome is fasciotomy. ओके, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेंगे, फेशिया को काट देंगे. एंड कौन सी, डीप फेशिया को. ओके, फेशिया को जो प्लेन होता है फेशिया का या मसल का, उसी में काटेंगे. लाइक मसल का यहाँ पे जो प्लेन या फेशिया का प्लेन है, इट इज लाइक दिस. सो अपन कभी भी ऐसे नहीं काटेंगे. Okay, you will slit like this longitudinally, example in the forearm. So fasciotomy, तो fascia जैसे करती तो जो भी muscles होगी, जो जिन पे pressure होगा, तो pressure obviously release हो जाएगा. And if you watch any video, या फिर सबको at least देखना और करना चाहिए fasciotomy, you will see कि जैसे ही आप slit करोगे ना, the muscle will just पॉप आउट लाइक बलून की. उसमें इतना ज्यादा स्वेलिंग होती है कि दे विल जस्ट पॉप आउट लाइक अ बलून. ओके, सो दिस इज योर कंपार्टमेंट सिंड्रोम. एंड सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इन द लेग इज योर फिब्युलेक्टमी. फिब्युलेक्टमी जो होती है उसमें क्या करते हैं, इट इज नॉन फंक्शनल बोन. सो जो मिडिल 1/3 होता है, द मिडिल 1/3 ऑफ द फिबुला इज एक्सरसाइज टू डिकम्प्रेस द लेग. एंड इसकी अच्छी बात ये होती है कि it decompresses all compartments. लेकिन what is the drawback? Drawback is fibulectomy आप बेड साइड, वैसे तो फेशियोटमी भी बेड साइड नहीं करनी चाहिए, but in generally it is such an emergency condition कि you can do it at bedside also or in minor OT only. But fibulectomy करने के लिए you will need to give spinal or the GA, general anesthesia or spinal anesthesia to the patient, and it is a longer procedure and a complex procedure. Dissection करना, काटना, इससे अच्छा सीधे just put a incision and cut the fascia and release the pressure. Okay, this is the treatment. Like here you can see fasciotomy कर रखी है, fascia काट रखी है, and you can see the muscles. Okay, and you leave it as such. Do a nice dressing. Okay, a very soft and very loose slab, and limb elevation, active toe and active finger movements, very important. So हाथ में limb elevation कैसे कराते हो? If the patient is supine, you put the limb like this. So कैसे करोगे इस limb को? You just use a stockinette or generally a bandage can do, and you tie that to anything above, so the limb will be like this. Okay, now non-operative measurements we have already discussed ki bivalving or slitting the cast, losing the dressings. Okay, and hyperbaric oxygen therapy, because oxygen की ही कमी है बेसिकली, जिसकी वजह से देयर विल बी गैंग्रीनस चेंजेस और इंजरी टू द नर्व्स. सो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज गिवन. और अगर लेग के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, सो दिस पोजीशन इज बेस्ट टू डिक्रीज द प्रेशर. एंड कैसे, you need to splint the ankle.
Splinting of ankle means fixing the ankle between the neutral position. See, this is the neutral position, between the neutral position and palmar flexion. तो इसके बीच में, like in 37 degrees, you will fix it, you will splint the ankle, and it decreases the compartment pressure. So operative में, emergency में, you need to do the fasciotomy of all the compartments. ओके एंड कब करना है फेशियोटमी का इंडिकेशन क्या होता है? अगर उसी लिम्ब में सिस्टोलिक प्रेशर जो है उसके 30 mm ऑफ द रेंज में है, सॉरी नॉट सिस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर, लाइक फोर आर्म में है. सो फोर आर्म में इफ यू मेजर द डायस्टोलिक प्रेशर एंड मान लो द डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 एंड द कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट का प्रेशर इज 50 to 80 के बीच में, देन फेशियोटमी कर, सोचना ही नहीं है. और वैसे तो यू विल सी ऑब्वियस साइंस, पेन, स्वेलिंग, ब्लिस्टर्स, रेडनेस, shiny appearance, okay, warmth, you can very easily diagnose clinically. अब hemophilics में compartment syndrome हो सकता है and they are more prone because there are more chances of bleeding and there is more bleeding, जिससे hematoma भी बड़ा होता है. So before even measuring the compartment syndrome you need to give factor 8. ओके ये याद रखना है आपको. नाउ टेक्निक्स, तो टेक्निक्स जो होती है वो डिफरेंट लिम्स में अलग अलग होती है. सो फर्स्ट वील डिस्कस द टेक्निक्स इन द लोअर लिम्ब. सो लोअर लिम्ब के अंदर the most common technique that is used is the anterior-lateral incision. Anterior-lateral incision कहाँ पे? Lateral aspect of the leg में, like this. Okay, lateral aspect of the leg में you give the incision. Lateral aspect of the leg, here you can see this is your fibula. So अगर if this is your fibula, at the lateral aspect you give the incision like this and the muscle will pop out and the pressure will be released. Okay, so anterior lateral incision, यहाँ पे आपको सिर्फ सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व को प्रोटेक्ट करना है. इतने डीप में वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर कि एंटीरियर लेटरल इंसिजन मोस्ट कॉमन होता है. पोस्टीरियर मीडियल इंसिजन टू रिलीज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड हियर यू नीड टू प्रोटेक्ट द सेफेनस वेन एंड नर्व. ओके, एंड पोस्ट ऑपरेटिव क्या करना होगा? ड्रेसिंग. एंड प्राइमरीली आप क्लोज नहीं करोगे, क्लोज कर दिया तो वापस कम प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली देयर इज डिलेड क्लोजर. ओके, एटलीस्ट 3 to 7 days. ओके, एंड व्हाट आर द प्रोज ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम, या व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट? वी हैव डिस्कस्ड easily perform, very excellent exposure. Okay, but only the thing is you need to give the incision, that it is a surgical procedure. Okay, so दो तरीके होते हैं लेग में. एक तो होता है anterior lateral incision and posterior medial incision, दोनों देना. Okay, either you do give 2 incisions, obviously बात है exposure will be more, but you can give 1 incision only, that is your single lateral incision, जो बिल्कुल लेटरल साइड पे लग जाता है, एंड इट इज मोर इजियर टू परफॉर्म एंड देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ इंजरिंग एनी इंपॉर्टेंट वेसल और नर्व. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज योर सिंगल lateral approach. Okay, this is your single lateral approach. This is your single lateral approach. Now in the arm, in the forearm, there are 3 approaches. First is like this, second and third. ये दोनों तो हो गए आपके फ्लेक्सर या इंटीरियर कंपार्टमेंट में. दिस इज योर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. एंड ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे you protect median nerve. Okay, यहाँ पे what you do, यहाँ पे you protect the median nerve. Okay, so these type of incisions can be done. Okay, median nerve को you need to protect. So very important is your
कंपार्टमेंट सिंड्रोम के इंसिजन, बस ये नाम याद रख लो। यहाँ पे क्यों नहीं गए अपन, यहाँ पे इस एरिया में, बिकॉज हियर योर वेरी इंपॉर्टेंट रेडियल आर्टरी आती है। सो लेटरली आप इंसिजन especially in the middle and the distal part of the forearm में laterally you don't put the incision. Okay, now there is one term that you need to remember, and that is your क्रॉनिक एक्सर्शनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। और नाम से ही पता चल रहा है, पहली बात तो एक क्रॉनिक होगा एंड एक्सर्शन की वजह से होगा, स्पेशली एक्सेसिव एक्सरसाइजेज वगैरह करने से। सो इट इज मोर कॉमन इन एथलीट्स। ओके, इट इज मोर कॉमन इन एथलीट्स। तो इसमें क्या होता है, क्रॉनिकली जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, तो एक्सरसाइज इंड्यूस देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर। क्यों होता है ये, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सरसाइज द मसल्स एक्सपैंड, और उससे क्या होता है, मसल्स एक्सपैंड करने से फेशिया बिकम्स टाइट, सो देयर इज प्रेशर, सो देयर विल बी अक्लूजन ऑफ द वेसल्स एंड द नर्व। और जो सारे सिम्टम्स होंगे वो सारे के सारे सेम होते हैं जो अपन ने अक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर देखे, सेम सिम्टम्स होते हैं। बट रिमेंबर कि वो सिम्टम्स, these symptoms subside when you stop the activity, and they will re-emerge if you do the same activity with the same load again. तो एक डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो ये हो गया कि एक्टिविटी बंद करने से सबसाइड हो जाता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि साइंस एंड सिम्टम्स आर लेस सिवियर, signs and symptoms are less severe as compared to the acute compartment syndrome. Okay, so symptoms will subside and return when the activity is reduced, and very importantly, this chronic exertional compartment syndrome is not a medical emergency, because it will subside if you will stop the activity. So very important that it is not a medical emergency. Now Volkmann ischemic contractures will develop after Volkmann ischemia, that is ischemia in the forearm. Okay, so it is following compartment syndrome of the forearm. ओके, सो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाएंगे। क्यों, आफ्टर द कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऑब्वियसली द मसल्स विल हील by fibrosis leading to the contractures. Okay, and most commonly there is this flexion, there is affection of the, या कौन से part of the forearm affect होगा, the flexor compartment of the forearm will be affected. Okay, the flexor compartment of the forearm will be affected, and साथ में the peripheral nerves are also affected, so there will be hypoesthesia, paresthesia, sensory and motor loss, tingling, numbness sensation in the forearm and the hand. So there will be marked atrophy. The skin जो होगी वो अब ड्राई एंड स्केली हो जाएगी, नेल्स में भी एट्रोफिक चेंजेस होंगे, एंड वहां पे पैसिव स्ट्रेच टेस्ट था, यहाँ पे यू विल हैव वोक्समैन साइन. It is very typical of this and very easy and very important. What is Volkmann sign? Volkmann sign simple ये होता है कि if you will extend your fingers, then you will not be able to extend the wrist. Okay, अगर आपको wrist को flex करना है, then you need to have the fingers in extension. अगर आपको wrist को extend करना है, then you need to have the fingers in flexion like this. Okay, so very important is this. And Volkmann ischemic contracture के लिए you have this Volkmann splint और टर्न बकल स्प्लिंट. फोटो दिमाग में रख लो, फोटो पे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट. टर्न बकल स्प्लिंट इज यूज्ड फॉर द Volkmann ischemic contracture. ओके, एंड व्हाट, अगर Volkmann contracture जो होता है लोअर लिम्ब में हो गया, तो फुट जो होता है, फुट कैसा दिखेगा, देयर विल बी पेस. दो इंपॉर्टेंट चीज होगी, फर्स्ट देयर विल बी पेस कैवस, you can see here, and there will be claw toes, there will be claw
toes. Okay, so very important, remember this. नाउ अक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम जैसे दिखने वाली और भी चीजें होती है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डिफरेंशियली डायग्नोज दिस. सबसे पहले सेल्यूलाइटिस, तो ये ध्यान रखना कि सेल्यूलाइटिस में देयर विल बी पस एंड associated fever. Generally there will be no history of trauma or no fracture. Okay, there will be pus, fever, infection in cellulitis, foul smelling, odor and all you will see. Osteomyelitis में अगर acute osteomyelitis है, then you will see the changes in the x-ray, and also there will be associated no sign of trauma. ओके, ट्रॉमा का कोई साइन नहीं होगा. एंड द सिम्टम्स जो होते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस के, लाइक फीवर एंड चिल्ड्रन एज ग्रुप, रेज्ड टीएलसी काउंट्स, ऑल दिस यू विल सी इन द अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस. डीवीटी इज अ क्रॉनिक कंडीशन जहाँ पे पेन कम होगा. पेन इन सब कंडीशंस में दैट विल डिस्कस, इन सब कंडीशंस में पेन इज लेस देन दी कंपार्टमेंट सिंड्रोम. कंपार्टमेंट सिंड्रोम का पेन बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है. पेशेंट इज लिटरली इन द एग्नी. ओके, डीवीटी में क्या होगा, सबसे पहले डॉपलर वगैरह में यू विल सी क्लॉट. ओके, एंड ऑल्सो in the venous system, and also there will be chronic condition in case of DVT, and there will be claudication in DVT. DVT में क्या होगा, claudication होगा. इतनी ज़्यादा swelling and redness, warmth नहीं होगी. Gas gangrene में you will have the pungent odor etc. Same with the necrotizing fasciitis में तो wound होगा. Peripheral vascular injury में starting में ही pulselessness होगी, and इतने acute symptoms generally नहीं होते हैं. Rhabdomyolysis में also there will be you can easily diagnose it from the urine test etc. So डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेनली डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका इंपॉर्टेंट है. एक तो डीवीटी, पेरिफेरल वास्कुलर इंजरी से एंड सेल्यूलाइटिस से, एंड आई हैव टोल्ड यू कि कैसे करना है, एंड इट इज वेरी इजी टू डिफरेंशियली डायग्नोज इट विद देम. ओके, सो दिस वाज अबाउट द कंपार्टमेंट सिंड्रोम. थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर देते हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम द कंपार्टमेंट सिंड्रोम, they are general orthopedics questions. So questions करते हैं, and after the questions I'll just briefly revise you about the compartment syndrome. Okay, so first question is, after every question I'll give you 10 seconds, and if you know the answer you can type in the live chat box. So first question is, in case of reimplantation of an amputated digit, which of the following structures is fixed first? Here are your 10 seconds. Okay, so the answer for this question will be D, bone. याद रखना, कोई भी एम्पुटेशन आएगा, एंड इफ देखो जनरली होता क्या है, कोई भी एम्पुटेशन आता है, सो इफ यू आर विलिंग फॉर री इम्प्लांटेशन, देन सबसे पहले it is consider the main thing that decides ki whether reimplantation is done or no, it is time since injury. Okay, time since injury, and generally speaking 8 to 12 hours are the maximum. After 12 hours तो करना ही नहीं चाहिए. Okay, 8 hours, and for the question I'll say कि 8 hours. Okay, 8 hours से कम है टाइम सिंस इंजरी, देन यू कैन गो फॉर द रीइम्प्लांटेशन. एंड रीइम्प्लांटेशन में ऑर्थोपेडिशियन का काम सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज ही इज द फर्स्ट सर्जन टू गो इनटू दैट सर्जरी, बिकॉज बोन सबसे पहले फिक्स करते हैं. तो सबसे पहले यू डिब्राइड द एरिया, देन यू फिक्स द बोन, then the
tendons are repaired, and ये दोनों करके you pass on it to the CTVS or the plastic surgeon. They will repair first the artery, then the nerve, then the vein. Okay, artery, nerve, first artery, then nerve, then vein, and then you do the closure. Okay, and then you keep it under observation, because there is one phenomena called as, एक phenomena we study कि जिससे there is ionic destruction and it will lead to the instant death. Okay, so firstly आप debride करोगे, then bone fix करोगे, debride, then bone, then tendon, then nerve, sorry, then artery, then nerve, and then your vein, then closure is done. Okay, so very important कि ये order होता है reimplantation का, आपको याद होना चाहिए, very easy. Now second is agents which decrease bone resorption in osteoporosis are all except. Okay, here are your 10 seconds. Okay, so the answer for this question will be teriparatide, because this drug does not decrease the bone resorption. It is not the anti-resorptive drug. इसके अलावा सारी anti-resorptive drug है. And ये osteoporosis is very important, especially ये जो pharmacology of the osteoporotic drugs is very important. And NEET PG 2021 पे there was one question about this, and उसमें जो answer था that was related to teriparatide only. ओके, सो ये अच्छे से पढ़ना ये चीज. सो व्हाट आर दी एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग्स, यानी जो बोन रिजॉर्प्शन को कम करेगी. फर्स्ट इज योर रिलॉक्सिफिन, which is selective estrogen receptor modulator, that is SERM. Bisphosphonates, they are the first line and the treatment or drug of choice in case of osteoporosis. They are the bisphosphonates, जिसके भी पीछे ड्रोनेट्स आ जाता है, that is your bisphosphonate. Okay, first line and the drug of choice anti resorptive drugs, because they are anti osteoclastic. Okay, osteoclast के अगेंस्ट ऑस्टियोक्लास्ट को डिस्ट्रक्ट करती है. सो bisphosphonates also anti-resorptive. Hormone replacement therapy like giving the estrogen in postmenopausal women. Calcitonin, calcium and vitamin supplement. And very important is denosumab. Denosumab क्या होती है? Denosumab is a monoclonal antibodies which inhibit the maturation of the osteoclasts. And कैसे? Because they inhibit the rank ligand by binding to the, they inhibit the rank ligand, and so osteoclast will not be able to bind and they will not be able to mature. अब होता क्या है एक्चुअली में, पैराथॉर्मोन आया. So parathormone increases bone resorption, and bone resorption is done by osteoclast, but parathormone has no receptors on the osteoclast. So what parathormone does? Parathormones activate the osteoblasts, and these activated osteoblasts जो होते हैं, they activate rank ligand, and these rank ligand bind to the osteoclast, and they leads to increased activity and maturation through the rank ligand or the rank mechanism. So ये important है. तो इसको inhibit करता है monoclonal antibodies, that is denosumab. Now what is teriparatide? Teriparatide bone resorption को कम नहीं करता है, ये bone formation को increase कर देता है. It is a parathormone analog. Okay, parathormone ये याद रखना है. फिर एक ड्रग है विच हैव बोथ द फंक्शंस, यानी रिजॉर्प्शन को कम करेगा एंड
बोन फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगा, एंड दैट ड्रग इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट। ओके, तो स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट के दोनों फंक्शंस होते हैं। टेरिपेराटाइड से बोन फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, एंड बाकी सारी ड्रग्स जो होती है ये बोन रिजॉर्प्शन को कम करती है। सो दिस वाज द क्वेश्चन इन नीट पीजी 21, and it was from our notes only. So the question was like this ki a old age like 55-year-old female presented to the OPD with complaint of chronic lower backache. The patient has history of wrist fracture by trivial trauma 2 years ago. Recently DEXA scan is done and the score of the DEXA scan is minus 2.5. Which of the following is incorrect? So here are your 10 seconds. Okay, so the answer for this question was C. सबसे पहले डेक्सा स्कैन एंड ये जो हिस्ट्री दी है इससे वेरी प्रोमिनेंटली वेरी इजीली यू कैन डायग्नोज कि हाँ ये ऑस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि डेक्सा स्कैन अगर 2.5 या उससे कम है देन ऑस्टियोपोरोसिस कंफर्म हो जाता है। कैल्शियम डेली डोज 1200 mg, यस नॉर्मली 800 होती है, 1000 होती है, बट इसमें वी इंक्रीज दिस, सो दिस वाज करेक्ट। ओरल विटामिन D3 एंड ओरल कैल्शियम बोथ शुड बी गिवन, यस दोनों साथ में देते हैं। बिस्फॉस्फोनेट्स इज नॉट गिवन फॉर मोर देन 1 year, यस नहीं देते हैं, बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ एवियन ऑफ द जॉ एंड esophagitis etc, so not more than 1 year. Teriparatized is always started before starting bisphosphonates, wrong. बिस्फॉस्फोनेट फर्स्ट लाइन होती है, ड्रग ऑफ चॉइस है, हमेशा बिस्फॉस्फोनेट्स ही पहले देंगे। ओके, सो द करेक्ट आंसर वाज सी बिकॉज इट वाज द रॉन्ग ऑप्शन or incorrect option. Okay, now next question. Blood supply to the head and neck of femur is mainly from, here are your 10 seconds and your 4 options. Okay, so the answer for this question is medial circumflex femoral artery. We have discussed it during our lectures कि 3 जगह से blood supply होती है femur, neck and head की. The first one is your medial circumflex femoral artery. Second are your retinacular arteries, and third is foveolar arteries from the artery of ligamentum teres. इसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड ये दोनों ही डिस्टर्ब these both are disrupted in case of fracture neck of femur, and सिर्फ तीसरी बचती है which is not the major one, and 1 and 2 में से भी I have told you earlier also कि medial circumflex femoral artery is the major one, so the answer will be medial circumflex femoral artery. Okay, so now we will shortly revise the कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम सब मेडिकल स्टूडेंट्स को आना चाहिए बिकॉज इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, ए वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस इट। सो डायग्नोसिस में यू विल हैव 5P, दैट इज योर पेन, पैलर, पल्सनेसनेस, पैरेस्थीसिया एंड पैरालिसिस, जिसमें से पेन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पेन एनसेड से कम नहीं होगा, आउट ऑफ प्रपोर्शन होता है, वेरी इंटेंस होता है, ओके, लॉन्ग लास्टिंग होता है, वेरी इंटेंस। ओके, सो प्लस देयर विल बी स्वेलिंग, blister formation, redness, warmth, okay, and associated with trauma, generally closed fractures, and that too supracondylar fracture, humerus fracture, both bone forearm, and your proximal 1/3 and distal 1/3 of the tibia के fractures के साथ। ओके, जैसे ही आपने डायग्नोज कर लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स व्हाट यू गिव, लिम्ब एलिवेशन, you go for limb elevation, remove or cast if it is tight, or you just uh,
make the cast loose by just dissecting it, okay, or by giving a slit. And you have to do the tell the patients to do the active toe movements and the active finger movements. With the treatment of choice is your fasciotomy. Okay, the treatment of choice is your fasciotomy कर देते हैं. Okay, in all directions. कैसे करते हैं we have already discussed, and it is very grave emergency, very important. Compartment syndrome, pain is the earliest sign, and passive stretch test करते हैं इसके diagnosis करने के लिए. ओके, सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि 2021 के अंदर वी हैड 100% स्ट्राइक रेट of orthopedics at Unacademy. So you can trust us, you can count on us for any examination. So please go and subscribe and buy your plans. We are running a limited time period heavy discount, and here are the screenshot. We had discussed every question of it, either in the main class, the rapid revision classes, in a question bank, special classes, marathon sessions, sab jagah we have discussed this question, so it was super easy. ओके, नाउ स्पेशल क्लासेस को मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ बिकॉज दे विल गिव यू योर एक्स्ट्रा एज ओवर योर कंपेटिटर्स. सो ऑन मंडे, दैट इज ऑन 20th, I will be having a special class at 10 p.m. on very important topic is your pot spine for your competitive examination as well as your professional university examination. Also, pot spine is very important. Okay, so see you at 10 p.m. Just download the Unacademy app and use this code to subscribe for this special class, and both are absolutely free. Okay, and both are absolutely free. So thanks for watching the lecture. Okay, I hope you like the lecture. You can ask your doubts anytime if there is, or if you are facing any problem in preparing, so you can ask such doubts in the live chat box on YouTube or the special class anytime. If you like the video, please like, share and subscribe, and use this code while subscribing on the Unacademy to get extra 10% off. And very important, INI-CET examination for 2021 is on November 14th. So जिनको लग रहा है कि हमारा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ, so they can take 3-4 days का off also, and if they want to prepare या उनका focus है, so buckle up and sincerely लग जाओ for the INI-CET 21 examination. Less than 2 months are left. Stay in touch on from the official website. Also on our lectures also, I will constantly tell you ki what is the last date, etc. So kal wale lecture mein I will tell you what are the important dates. And tomorrow in the morning at 10 a.m. Sunday सुबह क्लास लेके फ्री होते हैं पूरे दिन. ओके, सो सुबह वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है वर्टिब्रल कॉलम एंड इट्स इंजरीज पे, where we'll cover the anatomy of the vertebra as well as its injuries. So see you at 10 a.m.